chaos हो रहा है दिन में. Don't you see that? Why? Because the divide between the haves and the have-nots is so huge, it will work in a very limited way. That is where the Western countries have failed. This idea of promoting citizenship, promoting nationality, promoting patriotism, that does not work to those countries, because the population sankhya itna kam hai, and then the policy is very effective, they are able to manage. Because it was found in somewhere in California or somewhere, because those countries they don't witness. So your mere external show and dress and cosmetics and apparent all that, the change has to take place at deeper levels, at more fundamental levels. That is, now if you take spirituality as the basis, the formula that you work out will work not only for India, but it will work for the entire globe. That is why spirituality has a global dimension. And that is why it's India. India alone can give this lead. We can adopt the Western model of organization, working efficiently and all that. But in turn, we should give them our spirituality. So, the idea is very good. You must have this kind of a thing. How are you going to create this kind of a new citizenship idea, new attitude, new approach? Their lives. किसी को समझ में नहीं आती है, सब तो कहते हैं spiritual. Even the most worldly person does a conference on spirituality. What is it really about? Matter and spirit. The entire existence can be divided into two segments. One is matter and other is spirit. And they have a very slow come for this conference. She has to stretch her neck, somehow this, that. But if she comes to my position, she can see the entire audience. So looking at everything from the glass or the prism of matter is like sitting or standing at the same level and trying to measure a huge audience. Spirit is transcending, going a little higher, taking a higher view, and you survey, you are able to get hold of the entire audience. Through any path you do, the first thing is to recognize that we are divine. The second thing is to manifest this divinity. भगवान जी मान लीजिए आप बहुत सच्चे आदमी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप कुछ अच्छा काम नहीं करते, आप बैठ रहते हैं. What is the word use of your group? Every level is what is really happening in our life, day in and day out. So the ultimate goal of mankind itself is freedom. Now, how you can scale it up? To what extent? There lies the flowering of your inner life, the flowering of this manifestation of this divinity. हम सब लोग आजादी के लिए सुबह से रात तक हमेशा प्रयास करते रहते हैं. That is the one struggle all of us undertake every time. Whatever you do, you can reduce it to this equation. We are trying to reach in office. That is what we are trying to break free from the shackles of time, from the shackles of transport hurdles, from the shackles of demands from the family members just before we start for office. Whatever it is, every action of ours from morning to night can be equated to this struggle for freedom. That's why Swamiji said, Swami Kara said, realize your potential and reach your freedom. So you keep on chasing, you are trying to make up somewhere, then it shows its face somewhere else. So Swamiji said, supposing you realize your real nature as the spirit of the divinity, then he says, you'll be completely free from all deficiencies. All lack of freedoms will be taken care of in one go. Now I can tell you a small example. Many of us go through, these are all very small, everyday incidents common to the lives of all of us. Supposing it's a free day for you, holiday. Every now and then, you're eating, after 10-15 minutes, you take up something, have a sip of something, or a bite of something, keep on. Now you don't eat like that. Now, one way is, to give in to the demands of the body and keep on doing whatever the body demands. Supposing you put a stop, no, today I am going to read for 6 hours, I am not going to look at the page. Freedom of the senses, and the other is freedom from the senses and demands. So this heading, this nomenclature may not be very clear. No, the moment we think that the other person is different, she's having more comforts, more money, more cars, there is jealousy, there is intolerance.
You cannot say that, no, no, I am jealous of the other person. That cannot work. That is inconsistent. So, the more and more you learn to expand your personality, get a view that you are something very superior, very. Anytime when anything negative comes into your mind, you feel spiritual awakening in humanity. Thank you very much. It's a very illuminating address. In fact, Swamiji touched one of the themes of the conference, spirituality and corruption-free state. Now I invite our chairperson, Dr. Ananda Swamiji, to say a few words of comment. Revered Swamijis and dignified guests, आध्यात्मिकता आत्मा की भाषा है. Spirituality is the language of the soul. And as Swamiji has rightly pointed out, quoting Swami Vivekananda, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature internal and external. Do this secondary details. तो आध्यात्मिकता क्या है? इसके 6 आयाम हैं. आध्यात्मिकता इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल, और ये जो है इसके 6 आयाम हैं. श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्मा वाणी द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, या कर्म योग के द्वारा निष्काम सेवा करके, या फिर जो है वो योग भक्ति कर्म और ज्ञान के द्वारा है. ये 4 योग है जिसके द्वारा हुए हमें इसका जवाब मिलता है. ये आध्यात्मिकता का पहला आयाम है. दूसरा आयाम है हम स्वस्थ रहें, हेल्दी बॉडी एंड चेयरफुल माइंड. ये भी आध्यात्मिकता है. तो इसको कैसे करेंगे? इसको हर्ब्स के द्वारा, प्रॉपर डाइट एंड बी ए वेजिटेरियन. स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि हमें शाकाहारी होना है. ये है. और फिफ्थ डायमेंशन जो है स्पिरिचुअलिटी का, हमें देखना है कि प्रकृति में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं रहे. हम प्रकृति के साथ रहें और उसके साथ तालमेल बना कर रखें. वी हैव टू बी इन ट्यून, इन हार्मनी विद नेचर. वी हैव टू कीप द नेचर free from pollution, and whatever is necessary for that we have to do. And the 6th point is God has created this world, so trying to understand God and live in divine values. Each soul is potentially divine. तो वो जो है उसको जीवन में लाना और उसी डिविनिटी को सब जगह देखना. तो इस प्रकार से 6 वॉल्यूम है और ये 6 डायमेंशन से आध्यात्मिकता के. और इनको समझना, समझदारी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अंडरस्टैंडिंग यू सी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वैल्यूज एंड पुटिंग देम इनटू प्रैक्टिस. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी, ये जो 4 चीजें हैं उनको समझ करके हम अपने जीवन में लाएं, जिससे कि ये संसार जो है सुख में, शांति में, आनंद में और समृद्धि में जिए. और ये जो है ये स्पिरिचुअलिटी जो है इसका जो है हर व्यक्ति को पहुंचना है. इसलिए मेरा आप लोगों से अपील है कि हर कोई जो है इस आइडिया को टेक अप करके. स्पिरिचुअलिटी हैज गॉट 2 एस्पेक्ट्स. वन इज एकेडमिक एस्पेक्ट एंड द स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. तो आप लोग अपनी जगह पर जाकर के, जहाँ कहीं जगह आए हैं, अपनी जगह जाकर के इसका प्रचार करें और अपने यहाँ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई सेशंस वगैरह आप भी अपनी जगह जाकर के. Now we have the 3rd keynote address, and the speaker is Air Vice Marshal Vishwa Mohan Tiwari ji. He is going to speak on spirituality and rebirth. So it's a very interesting subject and topic. I invite. Now you can come down. I invite Air Vice Marshal Vishwa Mohan Tiwari ji to deliver his keynote address. I invite you on the stage, sir, first of all.
And this session will be presided by Ma Jayashree. And it will be co-chaired by Madam Mala Kapadia. Organizing committee members to offer a bouquet to Tiwari ji. Now sir, you can come on the dais and topic of my address is river and spirituality, a scientific view. There are many disadvantages. I'll give one example. It's not very old. It's about 2000, in the year 2008. Shri Jagadguru Shankaracharya, one of the highest learned persons on earth, the charge that was imposed on him. He was arrested in Andhra Pradesh, and he was arrested for a crime. In the fact that the fact is that he was reforming all individuals in India. Being an enlightened man, as Swami Shankaracharya had said, his mission was to spread light. The IG was a Christian, the Solicitor General was a Christian, and the time Chief Minister, the senior legal advisor, and the IG of Andhra Pradesh were Christians. He could not see any connection in the two. I was inquiring about what was happening. I was in the USA at that time, and I was what is happening in India. I was told that some prominent permission to start a movement against the illegal arrest on a trumped-up charge. And what Shankaracharya said is amazing. I was amazed. Jagadguru Shankaracharya said that nobody should justify by this concept of rebirth. It is very common to justify that a boy has taken birth in a woman's house because of his previous life. So when birth of an innocent child in a poor man's house is justified by this concept of rebirth, then what do we justify? What is justified is poverty. It is social. Poverty is a social business. However attractive or even charming the concept of rebirth may be, search for truth must be pursued, especially that of basis of rebirth and its relationship with spirituality are too important to be left at the mercy of traditional faiths, and that too blind faiths. Through one's self or with the help of a Messiah or God's Son, depending upon the dharma or religion one follows. Belief, which is difficult to sustain in this age of science, justice is ensured by belief in rebirth, as per Karma Siddhanta. Rebirth is accepted in Oriental religions as a fact, or as a belief beyond question. But he cannot move in time, which ultimately in the form of Kal devours him. He wants to conquer Kal or death. Must be consequences of his actions in his previous life. Such an intercourse among healthy parents normally leads to the birth of a child, and it is the law of nature which has been demonstrated and explained scientifically. No other action or agency is involved in this action of birth. Only parents are the cause. As the parents, so the child, prince or pauper. There is no need to invoke rebirth. It is not a scientific logic. The constitution of the society can explain it very logically. You don't have to invoke rebirth. If the law of an incident, logically or rationally or scientifically. And take the simpler, though irrational route
and let the superstitions, blind faith, injustice, etc. perpetrate. To cut my long paper short, I would say that law of causality has been rejected in science. Causality is after death. One, destruction of one's belief. Number two, waiting of the soul after death, after which one is sent to heaven or hell for eternity, as per one's deeds in this. Semitic religions have faith in this belief. Three, I have to discuss something about Karma Siddhant to tell you what it really means. In Karma Siddhant, there are four basic lectures about that Supreme. Only through His grace, and that grace can be obtained to getting a human body in earth is very auspicious. Even the gods, they feel privileged or while in this body, and you can fulfill the purpose of. In this small time, we can do only one thing, that we take this point to accept as a tool to our consciousness and contemplate. Then it becomes bring a. In fact, these type of statements through science or through the trainings are there, but we are running behind schedule. So immediately I am going to announce that now this lecture. आप लोग कहाँ से आए हैं? Mumbai opportunities are already listed, relisted. Dr. Malakrishna. सभायै नमः, सभा सदस्यभ्यो नमः। अस्मिन् शुभावसरे भगवत् शक्ति संस्कृत्य सर्वेभ्यः सर्वभ्यश्च मम हार्दिकं स्वागतम्। बस इससे आगे संस्कृत नहीं बोलूंगी, पर मेरी इच्छा थी कि ये जो कार्यक्रम है, ये एक कोई ऐसी भाषा नहीं है आज भी हमारे भारत में जो हम पूरे भारतीयों को जोड़ सके। संस्कृत शायद ऐसी भाषा है जिसका रिवाइवल होना चाहिए, क्योंकि ये देवों की भाषा है। और आपसे एक शेयर करना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले, पिछले 1 साल पहले हवाई गई थी मैं अमेरिका। वहां पे एक ग्रुप है, और वैसे काफी ग्रुप है जो नई कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं। तो ये अमेरिकन लेडी अपने मेडिटेशंस में पृथ्वी लोक से बाहर जाती है, वहां कहीं से घूम के जो आती है और बात करती है, तो उसने कहा कि संस्कृत सच में अपनी भाषा में अपना विश्वास कायम करना चाहिए। With your permission now I'll start in English because there are some नहीं है मुझे, पर यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा लोग डिस्कंफर्टेबल हो जाएंगे इंग्लिश से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। मजबूरी है, आकर बैठे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो इंग्लिश। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादातर हिंदी में बोलूं, और बीच में कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि हम आज जब आयुर्वेद की बात करते हैं, हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात, दुर्ग भी होगा कि आयुर्वेद भारत से निकला है। आज हर्बल जो ड्रग है, एक भी भारत का हर्बल ड्रग विश्व में यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाए ड्रग के रूप में आज तक नहीं स्थापित हुआ है। जितने हैं सब न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक भी ड्रग का मतलब अभी यूएसए में FDA अप्रूवल, एक भी भारतीय ड्रग या आयुर्वेदिक का ड्रग एज ए ड्रग के रूप में यूएसए में अप्रूव नहीं है। जितना है चाइनीज बहुत सारे अप्रूव वही तो बता रहे हैं। आप चाइना देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऐसे देश 2% है। ठीक है, हम जगत गुरु हैं, हमने जगत गुरु आप ज्ञान का उपयोग क्या हुआ? तो हम ये दुर्भाग्य 60 साल के होने जा रहा है स्वतंत्र हुए, और आज तक अभी एक भी ड्रग एस्टेब्लिश, हम FDA का लिस्ट उठा के देखें, एक भी आयुर्वेदिक ड्रग एज ए ड्रग नहीं है। ये हम लोग उस पर सोचना चाहिए, उस पर करना चाहिए।
जबकि बहुत काफ़ी अच्छा ये हमने बोले अभी एक भेजे कि 12 करोड़ और आपको दे रहे पैसे कहाँ कमी है। आप अच्छे लोग कमिटी आइए, क्योंकि इस देश का अगर आप आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं, प्योर मेटेरियलिस्टिक अप्रोच, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने विज्ञान को उसका उपलब्धि और लोग ले सकें। और साइंस क्या मांगता है, अच्छा हम पूछे क्यों ऐसा होता है, वो वैलिडेशन मांगते हैं, साइंटिफिक पैरामीटर। हम कहते हैं हमको चैलेंज करना चाहिए, हम प्रकृति बेस्ड समझ देंगे, दुनिया उसको फॉलो कर रहे हैं, हम वो भूल जाते हैं उनके साइंटिफिक वैलिडेशन के उनके लिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो लेकिन जब सत्व बढ़ता है, सत्व को प्रकाशक बताया, सत्वम प्रकाशकम रजय प्रवर्तकम और तम नियामक, ऐसा उन्होंने हमारे आयुर्वेद में कंसेप्ट दिया है कि सत्व प्रकाशक में सत्व किसको प्रकाशक करेगा, सत्व जब बढ़ेगा तो आत्मा को प्रकाशक करेगा। यानी जो भी कुछ हम जो भी कुछ अच्छा है, सत्व मीन्स जो प्रकाशक है, ज्ञान जो ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया है वो सत्व बढ़ने से होगी, रज और तम की क्वांटिटी कम होगी, सत्व बढ़ेगा। फिर सूटेबल कंपनी, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों की कंपेनियनशिप रहना, ये भी किन किन लोगों के साथ बताया। वन शुड accompany the people who advocate right conduct and by themselves following the path of righteousness। बुद्धि विद्या, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, जो बुद्धि विद्या व शील, जो बुद्धिमान है, शीलवान है, कैरेक्टर वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को के साथ में रहना, कंपेयर करना। और जो पाप आचरण में लगे हुए हैं, दूसरों के साथ कलह प्रिय हैं, और जो दूसरों का अधिकारों की स्पिरिचुअल को बढ़ाएं, या आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो हम कैसे सत्व को बढ़ाएं। तो सत्व बढ़ेगा तो सत्व प्रकाशक होने से आत्मा तो निर्विकार है, उसको केवल आवरण हटाना है। आवरण किसका है, रजोतम का। रजोतम का आवरण हटेगा तो सत्व सीधे प्रकाशक आत्मा को करेगा, और आत्मा अपने वास्तविक रूप में जो सच्चिदानंद रूप है उसका उस रूप में वो प्रकट होगी। तब व्यक्ति के सारे मिजरी, सारे अनहैप्पीनेस दे विल बी डिसअपियर। तो फर्स्ट है सदव्रत, द स्पिरिचुअल एंड रसायन, मेंटल रसायन। सम ड्रग्स मे बी यूज्ड in this concern like Brahmi, Jata, Mansi, Shankuti and other things also. And Dharaniya Veg we have described earlier. And prominence of sattvic diet leads to maintenance. Actually is linked. Next one. This is the relation between 5 bhutas, 5 jnanendriya, karmendriya and mind. This is the 16 षोडश kalas. षोडश kala we do the tarpana for the guru and the. This is the seat of 10 pranas, Dasha prana. One second, hold on. See this Dasha prana, the Ayurveda insists only by 5 pranas, and this Dhananjaya is very important, and the Dhananjaya is the factor which decides the lifespan of a kid, and Dhananjaya is the factor which decides the height of a human being. That's true. And the same Dhananjaya, the Aghoris, they do Munda Sadhana and they raise the Kundalini. The next one. Chakras. The Shakti Yoga explains 10 chakras. Next one. Position of chakras and the breath, it's related. Next one. Description of Mooladhara. The meaning of that. अपने जो मुख्य चक्र है उनका What is- वर्णन और वो कैसे दिखता है शरीर में, उसका No उन्होंने time. शक्ति, Sorry, there is no time to explain. कुंडलिनी शक्ति क्या है और वो जागृत होके कैसे चक्र के द्वारा ऊपर चढ़ती है, उसका वर्णन किया हुआ है। And this is very important. By sitting in the center of the body, Mooladhara, she controls and maintains our whole body through the physiological system, through the network of 72,000 channels. Next one. The what is called 3, and this is spirituality. How the time of Diksha, what the master does on you. Next one. These are the 3 knocks. The Mooladhara corresponds to the Brahma, the Swahisthana Vishnu, Rudra Agni, both the generator, operator and destructor, which is supposed to be the God. Next one. This is Sri Yantra concept, Trailokya Mohana Chakra. This is the explanation. These are the Shaktis. Next one. Down first. Yeah. This is the secret of mantra. Next one.
So you skip the entire chakras, you don't read it. और सारे अलग अलग है और कौन सी योगिनी शक्ति उस चक्र में है उसका वर्णन दिया हुआ है. What is the enlightenment? It is a state of mind where there is no thoughts. This is the opening quotation of. And how enlightenment is possible to Panchakarma treatment. Next one. Actually, one is the navel, uvula. This two is written by Agastya. It is known as Kaulamani Narayana Vasan, C1 spine. Okay. The other is mind Kaula Vasan, bottom of tailbone, where the Shakti sleeps. And one is Samadhi. No. Back. How Samadhi is possible? Next one. 96 principles during the time of death. What is happening with your body? That's why Tirumala, the great sage, he explains body as next one. Next. What is birth? Next one. The stages of death. The takeoff of body from the how the prana pushes from the Mahabhuta. Next one. Next. Up, back. This is the secret of Guru Bhagavata mantra. Next one. गुरु मंत्र का रहस्य. Of taking prana. One is the right nostril way, one is the left nostril breath. Next. Cycles of reincarnation. Why the soul has to come. And like later with the moon, will with your body. Next one. Planet. ग्रह नवग्रह कहाँ पे है और अपनी सूर्य राशि और चंद्र राशि किस तरह से अलग-अलग भागों को अनुभूत करते हैं. Any doubts? इसलिए आपने देखा आपका बड़ा ये योग का रहस्य और शरीर का कुंडलियों के बारे में कुंडली जागरण की प्रक्रिया आपने बताई, शरीर के 5 कोष उसके बारे में बताया. तो चूंकि समय अभाव चलिए 1, 2, 3. 3 more are left. We would like to show you a 15 minutes small movie for climate change and spirituality by Som Baba Mission. It's a small movie, please bear with us, and after that it will be followed with match. Thank you so much. और सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहता हूँ. उसके बाद आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर प्रोफेसर सुरेश कुमार who have invited me to be here in this conference. My lecture is on role of web services in the development of Ayurveda. Ayurveda, world's oldest and most successful pathy. Ayurveda is developed with an aim, as described by Acharya Charak in Sanhita Sutra Sthanam Duruk Jivite Adhyay 1. The word Ayurveda means a knowledge, wisdom, or essential truth. Ayurveda means knowledge of life. It is the principle of life that, if applied, results into holistic health, harmony, and happiness. It is the ancient wisdom of India, though a system of medicine, but aims at self-realization or knowing माना यथोक्तम आयुर्वेद स उच्यते. ये आयुर्वेद की परिभाषा है जो संहिता में लिखी गई है. इसका अर्थ है आयुर्वेद की परिभाषा जिस ग्रंथ में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इन 4 प्रकार की आयु के लिखित हित मतलब पथ्य बताया गया हो उसे आयुर्वेद एंशिएंट विजडम व्हेन ही नेवर हार्म्स एनी पर्सन इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन. हितायु उस आदमी की आयु कहते हैं जो किसी को भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है और भी ना ही उसको नुकसान पहुंचाता है. इसे हितायु कहा जाता है. He lives, moves and acts in kindness, humility, goodness and works with single-minded dedication in life. जिसकी हितायु होती है उसका लक्ष्य एक ही होता है, वो और उसी के लिए
पर्सनल जिंदगी में, काम काज वाले इलाके में भी और सोशल लाइफ में, दूसरे की जिंदगी में भी सुखायु, लाइफ ऑफ प्लेजर, अ लाइफस्टाइल वेयर पर्सन एंजॉयज क्वालिटी प्लेजर। वो इंसान जो हर तरह का सुख प्राप्त करता है वो उसको सुखायु में माना जाता है। दुखायु, लाइफ ऑफ सॉर्रो, जो अनकॉन्शियस रहता है, इग्नोरेंस रहता है, फालतू रहता है, वो दुखायु में आता है। अगर उस इंसान की आयु है तो वो दुखायु में आती है। इसका डिटेल्ड वर्जन आयुर्वेद की संहिताओं में, ग्रंथों में लिखा गया है ऋषि मुनियों द्वारा, आचार्यों द्वारा। तो I will cut it short little bit. So now the question is how to spread this website. So this is the website ancientayurveda.org. It is going to be updated within few days. So it is India's first complete Ayurveda organization on internet. Okay, so first of all I would like to show articles. You can create articles here. Ayurvedic doctors can create their articles and tell this whole world that what Ayurveda is and what spirituality. Vedascience.com website can also be created like this. It can be transformed like this, where all of us can create an account. Bitter gourd and coconut milk. So each and every types of vegetables are listed there. You can have the recipes from there. It is meals.ancientayurveda.org. All the females who are there can note down meals.ancientayurveda.org and they can use in their kitchen regularly, and it is available herbs. We have each and every description about that herb. From bee, bakayan, bakul, bajnak, badar, barakashiru, bada gopru, badi arani. Monetary basis like it is nowadays. And medical ethics of ancient India and upeksha, that is a feeling of professional detachment towards patients. There used to be Vedyas as well as Rajvedyas. Now, physician as a spiritual leader of the medical field. चरक में चतुष्पाद में physician, patient, drugs और nurse, यानी कि रोगी, चिकित्सक, द्रव्य और उपस्थाता के बारे में बताया गया है। और इन सबके 4 qualities को भी describe किया गया है। And out of the 4 components, physician, the entire community, the poorest of the poor, and combine the strengths and perspectives of various disciplines and professions. Let us all come together to achieve one common goal. And we should be carrying out innovative research to advance the ethical aspects of healthcare and health policy. And we should be hosting community lectures on medical ethical topics of public interest. Let the whole world know about it. Together we can. And lastly, we should hire responsibility to the physician to treat the patient as a whole, not just as a physical entity, but it should be physical, mental, spiritual, and social as well. And medical ethics practiced strictly will be the key to success in this successful implementation. Any other delegate? Thank you, Dr. Who are other delegates to present? Majid is going to present yoga and then past life regression therapy. हमारे यहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन पहले से था, लेकिन वो गूढ़ ज्ञान करके था। गुरु ही खाली बताता था, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ये कैसे करना है, क्या करना है। आज पाश्चात्य लोगों ने ये हमें बता दिया है कि ये कैसे करते हैं, एंड इट इज अ वेरी इजी टेक्निक पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और जैसे कि जब लास्ट स्टेजेस होती है स्पिरिचुअलिज्म की, समाधि मिल जाने के बाद की जो 7 समाधि के स्टेजेस हैं, तो एक बार समाधि का ज्ञान आ गया, अभी वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। एक बार मान लिया कि हमें इट इज अ लाइफ एक्सपीरियंस टुगेदर। जैसे कि एक भी बार किसी ने ध्यान नहीं किया है तो हम 10 बार जाके बोलेंगे अरे ध्यान करके देखोगे तो समझेगा कि ध्यान क्या होता है और ध्यान क्या फर्क ला सकता है हमें। तो वैसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग उससे भी डेप्थ में, ध्यान से भी डेप्थ में जाता है। एंड रिमेंबर इट वाज ऑलवेज अ हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देन ध्यान। So surely it is going to give better results. एक बात कहना चाहूँगी with the permission. अभी टाइम नहीं है ना? I can even if a few people want to have this experience of past life regression, कम से कम लगेगा. No problem. 5:30 to 7:30 is the lunch time. You can take 2 hours. Yeah. If somebody is interested. So if anybody is interested, I can take the sessions, past life regression session, क्योंकि regression लेने के पहले
इतना छोटा बताने से रिग्रेशन फट से होगा नहीं, तो थोड़ा सा और इलेबोरेट बताने के बाद सेशन प्रोफेसर मिश्रा सर के बारे में, ये तो साइंटिफिक प्रूफ है, पुनर्जन्म होता है। फिर मैं आपसे आग्रह करेंगे 15-20 मिनट के लिए और ध्यान बनाए रखें। धन्यवाद। What I see, what I feel, and what I understand. Individual tries to define this abstract concept on a personal level according to his temperament and capacity. In my opinion, spirituality is an awareness that connects man to the ultimate that is within him. Man can feel it but can't see it. It tries to transform human consciousness into divine consciousness. Spirituality is discovered through self-experience. Sifting, migrating to the other jungle from this jungle. And look how beautifully they take care about their vision in your mind, on your mind. And what is the necessity of orientation? Otherwise, one day, when you'll be dying and you'll be above, you have to hear, you have to feel the deep breathing of our future. What have you left for us? And you'll be the part of that bitter history.
sea or ocean acidification, many आप दोनों आ जाओ। जो भेज देगा उसको बुलाना आप हम लोग खुद ही फोटो वो आपके मतलब अच्छा विशेष तौर पर देखेंगे फोटो कि आप अकेले खा रहे हो हमें नहीं खिला रहे बना हुआ था लेकिन हमने खुद देखा है लेकिन ऐसा बहुत कम अध्यापक रहे स्वामी हम अध्यापक रहे जीवन में एक बार हाई स्कूल के बच्चों एक काम करूँ मैं उसे नहीं बुला आप देखेंगे रणवीर सिंह यही मैंने यहीं से शुरू किया था कैरियर और वो जानता था कि अगर ऐसा किया तो गौरव नरक में या कितनी ही जोड़ियों तक मुझे नरक भोगना पड़ेगा। उस अर्जुन को उसका एक चक्षु निर्णय था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने उसे विज्ञान का ज्ञान दिया कि तू जो सोच रहा है वो गलत है और जो करना है वो ये है। तुम्हारा इंडिविजुअल जो स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, उसका पालन करो।
अगर तुमने वो पालन नहीं किया तो ज्यादा तुम पाप के भागीदारी बनोगे। फिर उन्होंने उसे पूरा धर्म अधर्म की यह सृष्टि अनादि अनंत है, लेकिन इसके प्रारंभ हुआ है, इसका प्रारंभ हुआ है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, तो प्रारंभ हुआ है। फिर उसके साथ ईश्वर और आत्मा दोनों हैं, लेकिन ईश्वर और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुखा सकता है, किसी प्रकार से इसका कोई वो नहीं होता, और अनंत है और इंडेस्ट्रक्टिबल है। जब ये बता दिया तो अब ये अर्जुन के उसने प्रश्न उठा कि भाई जब आत्मा स्थिर है, कुछ नहीं हो सकता, तो इसका जो हमारा तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, पुनर्जन्म के भगवान कृष्ण ने उसी में कहा कि ये सारी सृष्टि जो है वो अन्न से पैदा हुई है और अन्न से विकसित होती है। आज जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं, हम बड़े इसका क्या कोई बगैर पहुंच गए। आप जानते हैं मुझे सब न्यूटन की थ्योरी बहुत है। मैं ऐसी कपियों ने कहा कारण भावात कार्य भाव है, कारण के बगैर कार्य हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें जन्म मिला तो क्यों मिला, कोई इसका कारण होगा। साइंटिफिकली देखिए, रैशनली देखिए, लॉजिकली सब देखने जाता है, इसी तरह में मिल जाता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जैसे प्रोसेस साल में आप लोगों में भी बहुत आदमी एम्प्लॉय नौकरी करते होंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शायद गवर्नमेंट स्टेट कमिटी भी है कि जब आप 20 साल काम कर लेंगे तो BRS लेकर आपको ग्रेजुएट मिलेगा। 30 या 35 साल को कुछ कर लेंगे ग्रेजुएट, अदरवाइज नॉट। जैसे मैंने इन माय केस आई हैड सर्टिफाई नहीं हुआ। इस तरीके से कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका फल इसी तरह में भी करता है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं, आपने एक वर्ष लगाया, 10 साल में उसकी छाया है मेरे 5 साल में, तो ऑन दैट एनालॉजी हमें ये जन्म देता है। कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, कुछ बुरे कर्म किए होते हैं। मैं ऐसे पसंद ये कह रहे हैं कि ये कारण है उन कर्मों के भोगों का फल हो। इसका कोई ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन तो उसका होगा जो आदि नहीं है। जो जन्म लेगा उसी का सोर्स होगा, और जिसका अंत होगा, जिसका अंत नहीं होगा उसका सोर्स कहां से होगा। अनादि है, इसी वजह से अर्थात अनादि आदि के उल्टा होगा, अपोजिट ऑफ आदि, which doesn't take birth, which doesn't die also, that is not ऐसे होगा। इस वजह से कहा आत्मा जो है हमेशा से अमर है। अगर ये सुनने में ही चली जाती है, सुनने से पैदा होता है, सुनने से कुछ हो ही नहीं सकता, सुनने तो सुनने ही होता है। अब उसको मालूम है कि कितनी आत्माएं हैं, असंख्य हम लोग नहीं जान सकते, बट गॉड बीइंग सो ओनली साइन, ही नोज द नंबर ऑफ आत्मा सोल्स, दे कंटिन्यू टू सोल। वही आत्माएं जो है वही के वही जन्म लेती हैं, तो वही आती हैं, वही चली जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई सोल क्रिएट कर दे, क्योंकि फिर उसका आदि हो जाएगा। अनादि कहां से रहेगी? जो चीज आज परमात्मा पैदा कर दे। गीता, उपनिषद, पुराण यहीं पे थे, गंगा माई जी यहीं पे हैं, हिमालय यहीं पे हैं, कृष्णा गोदावरी, ये सब चीजों ने इनको अलग कर दिया। नहीं तो अमेरिकन के भी अध्यात्म चेतना है, यूरोप में भी अध्यात्म चेतना है, भले वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, चरस कोई भी करे, हमारा देश में भी तो होते हैं। इंडियन स्पिरिचुअल रिच लेगेसी ऑफ द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये अलग है। किसलिए अलग है? यहीं पे गंगा जी है, यही जगह है, सारी दुनिया को साधु संत इंडिया ही पैदा किया। उधर लामा हो सकता है, पीर, ये सब बाउल, ये फकीर, ये सब इंडिया ही पैदा किया। तो ये सब कारण को देखते हुए यू कैन से द इंडियन स्पिरिचुअल संदेश तो मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मगर मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा संदेश ये है जो मैं इसको मानता हूँ कि सबको सुनने के पहले आपका अंदर में एक आवाज़ है, उसको पहले सुनो। सबको पहचानने के पहले आपको खुद को पहचानो। जैसे कि मुस्लिम रिलीजन में हम मुस्लिम आदमी बहुत हमको बुलाते हैं, उस दिनों में बोल नहीं पाया, और उसके बाद सही दिन हमारे जो बॉस हैं उन्होंने हमसे कहा कि जब सोहम आप लोग वहाँ पे क्या इंडिया एडिशन खबर सब सकते, मतलब ये वो पीला वाला ब्रोशर दे दीजिए। ये मुझे हिमालय कितनी गर्मी कितने ठंडे में हम लोग नंगा रहते हैं, तो हम लोग के कुंभक नाटक रहे चेक पूरा वो सब करना है, इसे आइस मेल्टेड वाटर, इसमें हम कुंभक कर रहे हैं।
नाउ ये जो जो ब्यूटीफुल जो व्यू आप देख रहे हैं ये आज खत्म हो गए ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग इट्स मोर बॉम्ब। तो ये अपतत्व का जो क्रिया होता है इसमें विदेश में पानी बहुत बहुत ठंडी होता है, बहुत वेरी कोल्ड। तो उसमें देयर आर मेनी स्टेजेस हाउ यू कंबाइन, पानी की जरूरत होगा। ऐसा फ्लैट जगह में ये क्रिया हो नहीं सकती। ऐसा हमारे अघोर में सब क्रिया होते हैं, पंचभूत का जगह जगह में जरूरत होता है। जब भी खिली तत्व में करें तो जमीन पे बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। कुछ क्रिया जो होता है अप तत्व में जो होगा वो पानी में आपको मणिपुरा चक्र, मूलाधारा सदिस्थान मणिपुरा अनाथ विशुद्धा का तो And the live program goes to South African countries. So he will Very nice also, meeting, Mr. they will also be collaborating. तो ये बहुत सारे ये सब इसमें सब दिया ये इसमें सब लिखा हुआ है डिटेल्स had walked out of the war, he could have helped intellectual preservation. So, then the knowledge only has to, there is no other solution without that knowledge or knowledge base. India has to create the knowledge base vision for the entire globe. Please go ahead. The conflict today from the Vatican and also the astronomy groups, you see that the art and the astronomy is integrated and throwing away. And you throw away your own science. That is the latest. Astronomy groups, lot of thousands of scientists are there. We have got to explain them what is the significance of cosmology studies from India. पैसे नहीं दे तू बैंक कथी है ये दिखाओ क्या हम ये प्रिज्यूम करें कि कोई नहीं है, सो ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें? आप आएंगे यू गिव योर इंट्रोडक्शन आल्सो एंड स्टार्ट विद इट।
about the lacuna in education system. Really speaking, according to me, that is the main cause of the present conditions in Bharat. If we would have continued our old system, which used to be in existence till about 300 years before, Bharatiya bodies in Western thoughts, and it appears now, as we can all know, that this has come true. So-called intellectuals, as far as we are concerned, but mostly the education system has destroyed the Indian culture here. I have written about 10 years before, I had written an article, education system in Bharat, which should be there. And there it was clearly analyzed the system completely, because the system that they had followed, nobody can be called educated. रमण जी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्री वेदव्रत आलोक मंच पे। आध्यात्मिक बंधु आप सबको नमन। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम मेरा ख्याल है मेरे जीवन का तो अभूतपूर्व क्षण है ही, आपके भी जीवन का अभूतपूर्व क्षण होगा, जिस पर हम यह सोच रहे हैं कि हम क्या है, क्या थे और क्या है और क्या होने जा रहे हैं, क्योंकि संभव हुआ है और इसका महत्व अगर नहीं जाना तो वापस पशु योनि में परिवर्तित होना है। अगर इसे का हमें ज्ञान हो गया कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला और क्या करना है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि, ये आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सारा जगत स्पिरिचुअलिज्म और साइंस को लेकर भ्रमित है कि क्या सत्यता है। यहाँ से वहां तक सबने अपने अपने झंडे उठा रखे, सब दूर व्यापार चल रहा है ईश्वर के नाम पर, सिद्धांत है, और आत्मा जो है वो जीवन का सिद्धांत है, जिसके कारण जीवन हमारा चल रहा है, जीवन चक्र है, और इसमें जो जीवन है वो इटर्नल है, लेकिन हमारे जो कर्म है वो शाश्वत है, पहले भी शाश्वत थे, आज भी शाश्वत है और कल भी शाश्वत रहेंगे। हमारे शब्द जो है वो इमॉर्टल है, और वही शब्द मातृशक्ति और नौजवानों, इस मेरे के अंदर जो है मुझे भी हाजिर होकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, और ये प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती। जैसा प्रबंध हमने पार्लियामेंट हाउस में कर रखा है, वैसा ही थोड़ा सा टच दे दिया जाता अंग्रेजी के विद्वानों की, हिंदी साथ साथ होती रहती, तो हमारा भंडार जो है ना कई गुना बढ़ जाता ज्ञान का। बस इतनी सी बात महसूस की, और इसके अलावा शादी जैसा जो है पार्टियों में जो बहुत बढ़िया जो भोजन मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको अकल नहीं होगा उसको ना, और चलता चलता करके जा रहा हूँ कि कागज जो है वो प्रिंटेड वो सर्टिफिकेट खत्म हो गए थे, तो जिनके प्रिंटेड सर्टिफिकेट जिन्हें नहीं मिले हैं उनके डाक द्वारा जरूर भेजे जाएं, ये प्रधाना चाहिए प्रार्थना है। और तो आज इस ब्याह से भी सुंदर आयोजन का था, जिसमें दूल्हा जो है दूल्हा के पदार्थ थे, आशीर्वाद स्वामी जी का था, अब स्वामी जी का था, और ये टीम जो है सारी की सारी टीम इनकी जो है सब की तरफ से हमारा जो है for inviting me here, and it's a really great occasion.
what I am making a personal request here is this: make the seeds grow at least in 5 centers in India itself, interface, and then have a knowledge base, and then that gives a real alignment, enlightenment. Now, in view of this cosmic alignment, Indian knowledge has to come up in a better way. This is where exactly we have an advantage. So please make a point also, make this cosmic alignment. माननीय बाबा जी, बहनों और भाई, हमने स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आत्मा के ऊपर ये वर्ड कॉन्फ्रेंस की। हम जानते हैं कि धरती की आत्मा गाय है। अगर हम गाय के ऊपर, गोरक्षा के ऊपर ऐसी वर्ड कॉन्फ्रेंस करें तो हम समझेंगे ये जो स्पिरिचुअलिटी पे कॉन्फ्रेंस है जो अधूरी है वो गाय की रक्षा की कॉन्फ्रेंस से पूरी हो जाएगी। तो धन्यवाद। आदरणीय एवं यहाँ पर सभागार में उपस्थित श्रोत्री समूह, विद्वज्जन एवं सन्यासी के बाद यहाँ पर हम इतिश्री नहीं मानते, इसकी परंपरा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस मंच से हम घोषणा करते हैं और चाहते भी हैं कि एक पूरे विश्व में कुछ सेंटेंसीज हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। लोग मूल्य से उन्हीं को मूल्य मानते हैं और उन्हीं को वैल्यू मानते हैं, परंतु जो मानवीय मूल्य हैं, जिनको हमारी इसमें संस्कृति में धर्म कहा, धृति, क्षमा, तपो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, दशकम धर्म लक्षणम, ये जो जितनी अहिंसा, परमो धर्म, नॉन वायलेंस, परोपकार, ये जितने भी जीवन मूल्य हैं, ये इस पूरे विश्व में घट रहे हैं, इनका ह्रास हो रहा है। तो इन मूल्यों की स्थापना के लिए हम एक ग्लोबल एथिकल एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फॉर बेटर लीडरशिप एंड बेटर गवर्नेंस एंड बेटर सोसाइटी, एक अच्छा नेतृत्व, विश्व की ब्यूरोक्रेसी, एक अच्छा राजनीतिक वातावरण, एक अच्छी मैनेजमेंट के लोग